अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि सैयदना अब्दुल क़ासिम हुसैनी उनके सिपाही के साथ मैदान जंग के लिए तैयार हो रहे थे और इस एपिसोड में उस जंग की तमाम तारीख़ आपके सामने पेश की जाएगी। सैयदना अब्दुल क़ासिम हुसैनी उनके सिपाहियों को लेकर मुल्क सिस्तान जब पहुँचे तो बादशाह का महल देखकर बहुत ही हैरान रह गए, क्योंकि उस महल की उसकी मजबूती और ख़ूबसूरती देखकर आप हैरान रह गए और अपने आप से कहने लगे कि इसी वजह है कि यहाँ का बादशाह जो है वो बहुत मगरूर है, क्योंकि वो बहुत ही दौलतमंद था। और जितने भी सिपाही सैयद अब्दुल क़ासिम हुसैनी के साथ आए थे उन तमाम ने अपने ख़ीमे लगाना शुरू कर दिए। तमाम सिपाहियों ने उस महल का मुहासिरा भी कर लिया और जब मुल्क सिस्तान के बादशाह को इस बात का पता लगा कि मक्का और मदीना के सिपाही वहाँ पर मौजूद हैं तो उसने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनको आसान से जो है शिकस्त दे देंगे। तो इस बात पर वहाँ का रहने वाला एक वज़ीर वो कहने लगा कि सिपाहियों को आप कम नहीं समझें, क्योंकि सैयद अब्दुल क़ासिम हुसैनी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ कि वो बहुत ही होशियार और दिलेर इंसान है और जितने भी इसके पहले जंग हुए हैं जहाँ भी मक्का और मदीना के सिपाही गए हैं वो कामयाब होकर लौटे हैं। आपने उनके सूफ़ी दरवेशों को कमतर जाना था और उनकी और काबा शरीफ की बेइज्जती की थी। यह बात सुनकर बादशाह बहुत ही गज़बनाक हुआ और कहने लगा कि वो उसका नमक खा रहे हैं और फिर भी उन बादशाहों की उन सिपाहियों की तारीफ़ कर रहे हैं। और वो आग बगोला होकर कहने लगा कि आप तमाम यहाँ से निकल कर जाकर जंग की तैयारी करें। तो उनमें से कोई भी वहाँ से नहीं हिला। तो फिर वो दोबारा जो है और भी गज़बनाक हुआ और कहने लगा कि अब तमाम यहाँ से जाकर जंग की तैयारी करें। तो वज़ीर ने अपनी मुलाजिमत की वजह से कुछ भी न कह सके और वो जाकर जंग की तैयारी की। बाहर चंद हज़ारों सिपाही अपने बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे और इतने में बादशाह अपने तमाम सिपाहियों को और हाथियों को लेकर महल के बाहर आता है और उसके साथ बहुत सारे घोड़े सवार और हाथी भी मौजूद थे और उन तमाम को उसने 7 सफ़ों में तक़सीम कर दिया। और जब मुल्क मक्का और मदीना के सिपाहियों की नज़र उन पर गई तो उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि उनका लश्कर जो है उनके आगे बहुत कम था। तो इस मौके पर सैयद अब्दुल क़ासिम हुसैनी ने अपने तमाम लश्कर को एक जगह इकट्ठा करके फरमाया कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपने सुनाई जिसमें आपने फरमाया था कि जन्नत तलवारों के साये के नीचे मौजूद है। इस हदीस को सुनकर आपका जज्बा ईमान जो है और भी मजबूत होने लगा और तमाम खुश हुए और आपने नारे तकबीर का नारा लगाते हुए मैदान जंग में कूद पड़े। और जैसे ही दोनों लश्करों ने मैदान जंग में इकट्ठा हुए तो खून की नहरें बहने लगे। तो ये तमाम खून की नहरें देखकर उस वक्त हाथी घबराने लगे और जिस वक्त वो घबरा कर भागने लगे जो भी सिपाही उनके रास्ते में आता था उन तमाम को कुचलते हुए बाहर चले गए। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क मक्का और मदीना के सिपाही जो है मुल्क सिस्तान के सिपाहियों पर हावी होने लगे और सैयद अब्दुल क़ासिम हुसैनी ने देखा कि सिस्तान का बादशाह बहुत ही कम सिपाहियों के साथ उधर मौजूद है। तो सैयद अब्दुल क़ासिम हुसैनी ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। तो जैसा ही उसने देखा कि आप उसके जानिब आ रहे हैं तो उसने किले के अंदर जाकर छुप गया। मुल्क सिस्तान के वज़ीर और उनके सिपाही लगभग और भी 1 लाख के करीब थे कि अब तमाम ने जंग को रोक दिया और हार मान ली। उस वक्त सैयद अब्दुल क़ासिम हुसैनी ने अपने सिपाहियों से कहा कि अंदर जाकर मुल्क सिस्तान के बादशाह को उनके पास लेकर आए। सिपाहियों ने किले में दाखिल होकर उस बादशाह को अपनी रस्सी से बांधकर सैयद अब्दुल क़ासिम हुसैनी के आगे लेकर आए और सैयद अब्दुल क़ासिम हुसैनी ने उससे कहा वो दरवेशों से माफ़ी मांगे। तो उस बादशाह ने और भी गज़बनाक होकर फिर बुरा भला कहने लगा
تو اس وقت وہاں پر ایک حبشی سپاہی موجود تھا. اس نے اپنے نیام سے تلوار نکال کر ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اس کے بعد سید عبدالقاسم حسینی ان کے سپاہیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوتے ہیں اور محل کے اندر ایک ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ باغیچہ اور تمام چیزیں موجود تھیں. خوبصورتی کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ بصرہ کے جیسا ہے، تو کچھ کہنے لگے کہ سمرقند کے جیسا ہے. ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ محل کس شان و شوکت کا تھا. سید عبدالقاسم حسینی نے اپنے فوج سے معلوم کیا کہ لگ بھگ 70,000 مسلمان جو ہے شہید ہو چکے تھے اور ملک سیستان کے سپاہی جو ہیں لاکھوں میں اپنی جان گنوا دیے تھے. سید عبدالقاسم حسینی نے اپنے بڑے بھائی سلطان سید محمد حسین کو یہ خبر بھیجی کہ وہ جنگ میں کامیاب ہو گئے، اور یہ خبر سن کر اپنے بڑے بھائی بہت خوش ہوئے اور اپنے دونوں فرزند یعنی سید عبدالقاسم حسینی کے فرزند ایک سید حسین اور 2 سید سعد الدین، ان دونوں کو سیستان و شاہپور کی جانب روانہ کیا اور ان کے ساتھ ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو ایک کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے اور ملک سیستان و شاہپور کے حقدار آپ ہیں، لہٰذا میں تحفتاً آپ کو وہاں کی بادشاہی دیتا ہوں اور تم وہاں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پابند رہنا. اس بات پر سید عبدالقاسم حسینی بہت خوش ہوئے اور آپ نے بہت سارے مسجد اور لنگر خانے جو ہے بنائے تاکہ غریب لوگ آ کر وہاں کھا سکے. چند سال سید عبدالقاسم حسینی وہاں کے بادشاہ بن کر رہے اور چند دن کے بعد آپ نے اپنے بڑے فرزند کا نکاح جو ہے سید حسین کا نکاح سیدہ فاطمہ مدنی صغیر سے کرایا. کچھ سال گزرنے کے بعد جمعہ کا دن فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگلے ایپیسوڈ میں جس کا ہمیں انتظار ہے ان کی ولادت سیدنا بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ جو ہے اگلے ایپیسوڈ سے سنائی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In the last episode, we discussed that Sayyid Abdul Qasim Husseini was planning to go for a war on King of Sistan. In this episode, we will discuss about the details of the war. So, Sayyid Abdul Qasim Husseini, along with his soldiers, when he reached Sistan, he was so surprised as he saw the palace of a king, as it was built with magnificent architecture. And he thought to himself that this is the reason why the king of Sistan is so arrogant, as he was so wealthy. And the soldiers who came along with Sayyid Abdul Qasim Husseini, they set their camps very close to the palace, and they also had an overall view of the palace so that they could plan to defeat a king in a war. As the king of Sistan, he got the information that the soldiers of Makkah and Medina have gathered near Sistan. He told to his soldiers that there is nothing to get worried, as they are more than capable of defeating the soldiers of Makkah and Medina. To which one of the ministers or advisors who were present there, they told the king that we must not get too overconfident, as he knows Sayyid Abdul Qasim Husseini for a very long time, that he is very capable as well as intelligent and a brave man. And moreover, recently the soldiers of Makkah and Medina, wherever they went, they have been winning their wars, and recently you have disrespected their Sufi saints and they are very angry about it. Upon listening to this, the king of Sistan got very angry and told to his advisor that he is being disloyal to his king, as he is praising his enemies. And he ordered his soldiers as well as his other ministers to go and get ready for a war with soldiers of Makkah and Medina. At first, none of them moved, but at the second time, the king got angry and commanded them to go and get ready for a war, to which unwillingly though, they all went and got ready for a war. And thousands of soldiers were waiting for the arrival of a king outside of his palace, and indeed the king came along with a number of soldiers, along with horse riders as well as his elephants. He first divided all of them into 7 small groups
to attack on the soldiers of Makkah and Medina. Meanwhile, Sayyid Abdul Qasim Husseini, he gathered them at one place and began to give them a speech, which also included one of the hadiths of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in which he told that paradise lies beneath the shadow of a sword. And upon listening to this, all the soldiers got very excited. This acted as a motive for them, which indirectly is indicating towards Shahadat. And the person who attains Shahadat, he will directly go to Jannah. By chanting Nare-e-Takbir, Sayyid Abdul Qasim Husseini along with his soldiers entered into the battlefield in such a way that neither of them even could notice where their friends and relatives were. The scenes in the battlefield were so horrible that the blood started to flow like a river. Meanwhile, in the battlefield, after seeing all the bodies as well as the blood, meanwhile the elephants started to get terrified. Trying to get out of the battlefield, they killed lot of soldiers whoever came in their way. And the war continued for a long period of time. At last, the Sufi soldiers, they got control over the soldiers of Sistani king. Sayyid Abdul Qasim Husseini noted that the king of Sistan was among very few soldiers and he tried to attack him. When Sistani king saw that Sayyid Abdul Qasim Husseini was coming towards him, he ran inside the palace and took shelter. Approximately still 1 lakh soldiers were present along with the advisors and ministers that they decided to end the war. Sayyid Abdul Qasim Husseini ordered his soldiers to go into the palace and bring the king of Sistan alive. And they tied to the king of Sistan with ropes and they brought the king of Sistan near Sayyid Abdul Qasim Husseini, told him to ask for an apology. At that time also, the king of Sistan, he was so arrogant that he began to speak ill about them along with his soldiers that who accepted defeat. As there was one Habshi soldier who saw all this ill speaking, he took out his sword and he beheaded him with one strike. And the king was dead. After this, all the soldiers, they all went inside the palace of a Sistani king and they all were very surprised as they saw the beauty of the palace. Some of the soldiers described the palace to Basra, which is in Iraq, and some of them described it to Sham, which is in Damascus. Abdul Qasim Husseini, after the completion of a war, he came to know that approximately 70,000 of Muslim soldiers had attained Shahadat, whereas the soldiers of Sistani king were killed in some lakhs. And Sayyid Abdul Qasim Husseini prayed 2 rakats of namaz and did dua for the people of Sistan or Shahpur. He also sent a message to the king of Makkah and Medina, who is his elder brother, Sultan Sayyid Muhammad Hussain, about the result of a war. The king, Sultan Sayyid Muhammad Hussain, felt very happy and he sent both the sons of Sayyid Abdul Qasim Husseini near him along with a letter, which stated that Allah subhanahu wa ta'ala has made Sayyid Abdul Qasim Husseini victorious. Now Mulk Sistan and Shahpur belongs to him. From now he will be the king of Sistan and Shahpur. He also told him to keep an eye on poor people and to follow in the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba. Sayyid Abdul Qasim Husseini constructed lot of mosques as well as almhouses in which he feeded lot of poor people as well as travelers. Sayyid Abdul Qasim Husseini continued as a king for few years and then he arranged marriage of his elder son Sayyid Hussain Zahid with Sayyida Fatima Madani Saghir, and then after a few years on the day of Jummah he was performing his prayer. In the morning prayer his soul left his body. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. And in the next episode we will know about the much awaited birth of Sayyidina Baba Fakhruddin Rahmatullahi alayhi. Assalamu alaikum.